हेलो एवरीबॉडी। अंडर हैशटैग नो माई कंट्री आज हम जानेंगे साउथ ईस्टर्न कंट्री मलेशिया के बारे में। मलेशिया जो पहले एक पोर्टुगीज सेटलमेंट था, उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी बना एंड देन इन 1957 इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। मलेशिया एक ऐसा देश है जिसमें दो हिस्सों में है ये कंट्री। दिस कंट्री इज one part of it, the western part of it is peninsula. That means तीन बाजू पानी और एक बाजू एक ऊपर का जो हिस्सा है वो थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज द ईस्ट मलेशिया। वहां पे सारावाक और सबा नाम के बहुत बड़े रीजन्स हैं। नाउ दिस मलेशिया एंड्स विथ सिंगापुर। सो यू नो दैट मलेशिया का ज्योग्राफी जो है वो साउथ चाइना सी में है एंड it is and the two parts of Malaysia also are separated by the South China Sea, and this peninsular Malaysia जो वेस्ट में है वो थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। मैरीटाइम बॉर्डर्स, दैट मीन्स द बॉर्डरिंग नेशंस आर सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड ब्रुनाई। ब्रुनाई करके एक बहुत अच्छा छोटा सा देश है एंड दिस इज वेयर इवन फिलीपींस यू विल सी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज फिलीपींस हैज इट्स एन आर्किपेलागी एंड फिलीपींस हैज a lot of islands. So this is the map of Malaysia. मलेशिया के जिस तरफ इंडोनेशिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट हैज आल्सो इंडोनेशिया, और ये जो पेनिनसुला मलेशिया है और इंडोनेशिया है उसके बीच एक पानी सी लेन, वाटर लेन जा रही है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी वे जहां से बहुत सारी शिप्स, it is the third largest seaway after Suez Canal and Panama Canal. So this is very important for the international trade. Strait of Malacca is very important for international trade. इसका ज़्यादातर हिस्सा इंडोनेशिया मैनेज करता है और थोड़ा बहुत हिस्सा मलेशिया मैनेज करता है स्ट्रेट ऑफ मल्लिका का, पर मलेशिया is benefited out of this Strait of Malacca. यहाँ से एशियन कंट्रीज से इंडिया की तरफ इंडियन ओशन और उसके बाद जाता है केनिया के पोर्ट पे और वहां से सुएज कैनाल से होते हुए यूरोप और अदर कंट्रीज में ये रूट पहुंचता है। सो वी हैव सीन हाउ इम्पोर्टेंट इज मलेशिया विथ ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम and Strait of Malacca, which are important parts of the country. Now, this is one of the, again, after Bangladesh, one of the fastest growing economies in the world. And Southeast Asian country, जिसको हमने बोला बहुत ही upper middle income economy हो गई है. And this country has a monarchy system. यहाँ राजाशाही है और ये राजाशाही इज अगेन यूनिक मोनार्की सिस्टम है जहां पे 9 किंग्स 5-5 साल के लिए रूल करते हैं एंड द करेंसी इज रिंगिट्स। इट हैज यूनेस्को साइट्स आल्सो, जैसे कि यू हैव द बटू केव्स, यू हैव द जॉर्ज टाउन। सो दीज आर द यूनेस्को साइट्स इन मलेशिया। मलेशिया का पॉपुलेशन करीबन 3.58 मिलियन है एंड द करेंसी इज रिंगिट। $1 के सामने हमें 4.09 रिंगिट्स मिलते हैं। टाइम के हिसाब से यदि हम देखें तो आपको बायर्स को या सप्लायर्स को फोन करना है तो हमसे 2.5 घंटे आगे हैं। So you have to understand के ये टाइम है जो आपको देख के बायर्स का कांटेक्ट करना है। Then the climate of this country is only 2 seasons.
dry या फिर rainy, and the temperature ranges from 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, but it has lots of forests, national parks, and highlands, that is the hilly area, and this hilly area gives cooler temperature, of course, so it becomes on an average about 16 degrees Celsius. The dialing code for Malaysia is 60, और यहाँ पे बहुत ही प्रचलित भाषाएं हैं जो हैं Malay. Malay is the national language or the official language, and English is the second language of this country. अगर हम statistically देखें तो मलेशिया दुनिया के अंदर एक्सपोर्टिंग रैंक जो है एक्सपोर्ट में वो है 24th, एंड इंपोर्टिंग कंट्री है 25th रैंक जिसका, और ट्रेड बैलेंस में 14 है. So we can understand that the majority, the major economic, जो बहुत ही जहां से मलेशिया को इकोनॉमी मिलती है वो है 54.17%. अगर 2019 की बात करें तो 54.17% सर्विस सेक्टर से हैं. Then the industrial sector or the manufacturing sector is 37%, 37.42%, almost stable. And the agricultural sector is declining slowly. अगर हम 2016 से 2019 की बात करें तो थोड़ा सा कम होता जा रहा है, and it is 7.28% of contribution towards Malaysia's economy. And this we have to understand that although Malaysia has a lot of forests, बहुत सारे हैं वहाँ पे जंगल और वहाँ पे sea हैं, coastal land बहुत हैं, फिर भी थोड़ा सा agriculture decline में है. And we have the trade, total trade statistics की अगर हम बात करें तो in 2019 the total exports was, the chart shows, 238 billion US dollars, and imports was 204 billion US dollars. GDP, services sector ke GDP, and then we have the goods and services ki jo GDP hai, exports and imports ki, usme hame 65 for exports and imports में 57.78% है. But if you look at the numbers and the figures, Malaysia has a trade deficit. That means export zyada hai, import kam hai. So this is what you know about Malaysia. हम अगर आगे जाएं तो we have understood that there are industries in Malaysia, there is construction in Malaysia, there is wholesale and retail sector, and there are services. Now ये क्या है? थोड़ा सा कम है because of the pandemic, but ये क्या है? What are these industries and what are these services that Malaysia is offering? We have to understand this. ये जो industries क्या है और ये services क्या है हमें समझना है. तो industries के अंदर agriculture industry भी उन लोगों ने गिनी है. Then we have mining. And then we have manufacturing, we have electricity and water, and we have construction. And service sector के अंदर हमारे पास मलेशिया के अंदर हैं transport, real estate, information technology, insurance and finance. बहुत सारे और भी हैं, but this is the main sector. These are the main sectors under services and industries. अभी हम देखते हैं कि मलेशिया के पास ऐसा क्या है जो दुनिया भर में मलेशिया इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम मलेशिया, जो दुनिया भर में मलेशिया बाहर देता है वो कैश क्रॉप्स मलेशिया का. इवन इंडिया इज इंपोर्टिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स, rubber and palm oil. 28% of the world's palm oil is being exported or produced, given to other countries from Malaysia. Rubber, आपने जिस भी तरह का रबर देखा है
वो मलेशिया से इंपोर्ट होता है. कोको, Malaysia has beautiful chocolate factories, so cocoa is another product. Pepper, ये जो पेपर है मलेशिया में खुद ये मरी जिसको हम बोलते हैं उगते हैं, but India is importing this pepper from Malaysia. Coffee, tea, some of the fruits like mangosteen, durian, dragon fruit, these are some of the exotic fruits according to our Indian markets that we are importing from Malaysia. And thereafter, we have fish because Malaysia, one part of Malaysia, the eastern Malaysia, is totally an island, whereas the western Malaysia, which is called peninsular Malaysia, is it's peninsula. That means तीन तरफ पानी है. अब यहाँ पे fisheries, fish का बहुत बड़ा काम है. The East Malaysia, Sabah and Sarawak, has a lot of timber, woods, मतलब कि टिम्बर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है एंड लकड़ा भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है. फेरस मेटल स्क्रैप, फेरस मतलब आयरन जिसपे जंग लग सकती है, फेरस मेटल स्क्रैप यहाँ से इंडिया इंपोर्ट करती है. देयर आर सम पेट्रोलियम ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स इंडिया इंपोर्ट करती है. बिटुमिनस मिनरल्स, टेलीफोन सेट्स एंड नेटवर्किंग पार्ट्स हम मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं. दिस इज नॉट ऑल, बट दिस इज अ लिस्ट on which you can work for your import export products. India exports to Malaysia. India क्या भेजता है? अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे मलेशिया में? So you have meat, you have light dredgers. आपको ये ड्रेजर के बारे में पता है क्या होता है? जब सुएज कनाल में एक वेसल फंस गया था तो उसको ड्रेजर्स ने नीचे से निकाला था. So these are called dredgers. Fire floats, we have maize, makai, medicaments, we have copper, we have groundnuts, we have onions, we have Indian fruits, we have wheat, we have potatoes, we have copper and copper alloys. अब एक और प्रोडक्ट है जो है कैप्सिकम. अब ये कैप्सिकम जो है उसकी जो पेपर की वैरायटी है उसको बोलते हैं पाइमेंटा. पाइमेंटा पेपर हम इंडिया से मलेशिया एक्सपोर्ट करते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ कैप्सिकम, काइंड ऑफ मिर्च, काइंड ऑफ चिली. सो दिस इज व्हाट वी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू मलेशिया. मलेशिया के जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं जहां से वो बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट कंट्रीज हैं जहां से वो बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती हैं, वहां द top export countries are China, Singapore, USA, Hong Kong, Japan, Thailand, and then India. So about 3.2% of Malaysia's imports come from India, and the countries are China, Singapore, USA, Japan, Thailand, Indonesia, South Korea, Germany, India, Australia. The chart will tell you everything in detail, but here is what I'm telling you, that India, although in the neighborhood, is lesser than China, Singapore, Japan, and other countries. We have the entire chart of the 3.2 overall import जो हमारा है, जो मलेशिया इंडिया से करता है. It is about mineral fuels, aluminum, we have iron and steel, we have meat, we have machinery, we have organic chemicals, we have copper, electronic equipment, zinc, and vegetables and fruits. These are the top 10 products जो हम 3.2% में जो मलेशिया इंडिया से इंपोर्ट करता है उसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं. टोटल ट्रेड पार्टनर, मलेशिया का जो टोटल ट्रेड है उसके पार्टनर्स भी हमने आपको बताए अभी. आई विल रिपीट वंस अगेन, इज चाइना, सिंगापुर, यूएसए, जापान, थाईलैंड, ताइवान, एक्सेट्रा. And total exporting partners also we have seen. 2020 में भी यही है ज्यादातर, बहुत फर्क नहीं है इसमें भी. And we have
The bilateral relations or the FTA of Malaysia are the CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and Malaysia. So if you want to import anything from India, from Malaysia to India, you have to give the certificate of origin of CEPA, CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. We have CESA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement between India and Malaysia, CESA, CECA. We have the ASEAN Agreement between the Southeast nations, and we have the ETIGA Agreement, which is just very recent, 2009. We understood that we've signed this with Malaysia and other pan-India and other countries of Asia. And this is world's largest free trade area. So this is another bilateral agreement or free trade agreement that we have with Malaysia, or Malaysia has with other countries also. Now we shall look at the FTAs. There are 6 regional FTAs. Regional means amongst a few countries. जैसे 3-4 countries हो गई, जैसे ASEAN is a free, it's a regional agreement. Bilateral means एक देश के साथ दूसरे देश, जैसे हमने सेसा की बात की. Then there are total 11, that is regional 6, bilateral 5. And we have given you a chart which talks about all these agreements, and you can refer to them on DGFT website as well. So if you have to import or export, please look at the free trade agreements of Malaysia with other countries and then go ahead. This is a very important indicator. We have the Malaysian government has Trans-Pacific Partnership, RCEP, RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, which India has not signed, if you remember. And we have the TPP, that is Trans-Pacific Partnership, with 12 other countries led by United Nations. So these are a few. And then there is FTAAP. About 58% of the world GDP comes through that, and that is between Russia and Taiwan and Malaysia also. So these are a few bilateral agreements or regional agreements that Malaysia has with other countries, जो दूसरे countries के साथ Malaysia का है. Opportunities क्या-क्या है? मलेशिया के साथ बिजनेस करना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, what are the opportunities? Why is suddenly Malaysia very important? Malaysia is ranked second in the terms of global competitiveness among the Asian countries. And the Bloomberg report talks about Malaysia's market scorecard as 5th most attractive country in Asia. And the ease of doing business and Asian country, World Bank also has ranked Malaysia on the top, that is 2nd position. So you have the Malaysian investment, that is how we have FDI, that is the foreign direct investment. Malaysia has MIDA, and there are a lot of countries which are investing in Malaysia for the benefit of their products or their countries. One of the FDIs that we have is in Malaysia. India is an important source. India is giving out FDIs in Malaysia for textile, chemical, petroleum, food products, pharmaceutical products, etc. And we have companies like Reliance, Biocom. We have countries like Temco Switchgears, and we have Tata Consultancy, Manipal International, Infosys, and other companies which have their offices. Even ICICI, they have their offices in Malaysia because they find Malaysia a good spot for the Asian market to be connected with the rest of the other nations in Asia. I have listed down few important websites that you must go through if you want to deal with Malaysia, because these websites talk about the customs, the importing norms. They talk about product-wise MITI, that is Malaysian
international trade, and we have a lot of other sites which talks about your import export statistics, etc. So this will be helpful to all of you in case if you go through these important websites. Come to now almost towards the end of it. Kuala Lumpur is the place which has a lot of international trade fairs, and we have listed down the top 10 trade fairs which you might want to take a chance to either visit personally when days are better or online. So these are a few, right from fashion and beauty, cosmetics, food and beverages, building constructions, etc. We have a lot of them over here listed down for you. And not to miss out on the missions abroad. That is the High Commission of Malaysia is in New Delhi. It's in Chennai. And we have the Indian consulate in Kuala Lumpur. We have given you the details. You can go through these details and you can find out the Commerce Department, the email ID, so that you can talk about, you can email to them for your products and get the list of importers in Malaysia. Malaysia is a country, ये एक ऐसा देश है जो हमारे नजदीक है, ये एक ऐसा देश है जो जहां पे इंडिया का काफी सारा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट भी होता है. It is good, a good country, and a country which will give you good returns, does not have very many fraudulent transactions, but we request you to first check, verify your buyers or your suppliers and go ahead. This country has a lot to offer, and we Indians have a lot to give to this country. So see to it that you have a good relationship with the buyers in Malaysia, and happy exporting. Exporting is always good. Thank you very much.